Hello students, welcome to Success Spectrum Academy, where we simplify science for success. तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, इन दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो उसका एक पार्ट है, राइट यस नो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, राइट यस नो, बल्कि जेई एस्पिरेंट जो सेकेंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, राइट यस नो, फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा. और नीट एस्पिरेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, राइट. सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, सो मीन्स आपने मीन्स कभी ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुना होगा. ओके, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, सुना होगा इसके बारे में. जब हम एक कॉम्ब को अपने, राइट नो, बालों में से, मीन्स अगर देखें तो बालों में से कॉम्ब करते हैं, राइट नो. सो व्हेन वी कॉम्ब हेयर ऑन अ ड्राई डे और ब्रिंग द कॉम्ब, ओके, क्लोज टू द टीनी पीसेस ऑफ पेपर, तो क्या होता है, वो छोटी छोटी पेपर की पीसेस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, राइट नो. ये इफेक्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो ये इफेक्ट क्यों जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के वजह से, राइट नो. सो इस चैप्टर में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उनकी प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे, राइट ऐसे नो. सो व्हाई दिस थिंग्स हैपन, राइट ऐसे नो, व्हाट रियली हैपन, ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, हाउ डू इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर वर्क्स. ओके, and we will study about, means here I can say this, when we comb our hair on a dry day, right yes no, and bring the combs close to the tiny pieces, right yes no. तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे pieces को अपनी तरफ attract करते हैं, right. Similar phenomena occurs if we rub a glass rod or a amber rod with cloths or with piece of fur. So why does this happen? What really happen in an electric circuit? So how do electric motor and generator work? Okay, so the answer to all these questions comes from a branch of physics known as electromagnetism. So the study of electric and magnetic interaction. These interaction involve particles that have property called electric charge, an inherent property of matter that is fundamental of mass. So we begin our study of electromagnetism in this chapter. Means ये basically हम लोग यहाँ पे electrostatics chapters है, right yes no, in this chapter by electric charge. So we'll see that, right yes no, it quantized and obeys the conservation principle. Then we'll study the interaction of electric charge that are at rest, called electrostatic interaction. Okay, these interactions are governed by simple relationship known as Coulomb's law. This law is more conveniently described by using concept of electric field. So one by one हम इसे देखेंगे, right yes no. So here you can see, next we have static electricity and electrostatic. So what do you mean by static electricity and electrostatic? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स का, राइट यस नो. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसा कि मैंने बताया. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. ओके, तो चार्ज यहाँ पे क्या है? रेस्ट में. एंड द फोर्स, द फील्ड एंड द पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस. So the study of static charge, their property, right is no, and interaction between them is called static electricity and or electrostatic. So in simple word, electrostatic is the study of electric charge at rest. So now we'll see the application of electrostatic. So in loudspeaker, okay, Xerox copying machine, design of cathode ray tube used in television and radar, electrostatic spraying of paint and powder, right yes no. So there we are using this as application of electrostatic. So what do you mean by electric charge? So the fundamental intrinsic property of material by which it exert or experience electric and magnetic effect is called electric charge. तो इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स अगर देखें तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट यस नो. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. So what is electric charge? So electric charge is the fundamental intrinsic property of material by which it exert or experience electric and magnetic effect is called the electric charge.
सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट अगर देखें तो कूलम होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय आइदर कैपिटल क्यू लिखें या फिर स्मॉल क्यू लिखें। डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल क्यू और A1 T1, right? Yes, no. So A means your ampere. So a proton has positive charge and electron has negative charge. So the force acting between two like charges is repulsive and attractive between two unlike charges. So matter that contain equal number of electrons. So here if we'll see matter that contain equal number of electrons or and protons is electrically neutral. If there is an excess of electron, the body has a negative charge. So if there is an excess of proton, the body has a positive charge. So the unlike charges nullify each other effect, means here I can say this, they will, means unlike charges are there, then they will nullify each other's effect when they come in contact. Then the electron of outermost orbit, if we'll see, of an atoms are far from the nucleus. So these electrons are loosely bonded with this nucleus and can be separated easily from the orbit by giving same energy or some energy we can say. So those electrons are called free electrons. अब इसको डिटेल में एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्लास्टिक रॉड और एक वुलन क्लॉथ को हम रब करेंगे, राइट? यस नो। तो रब करने पर दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपोजिट चार्जेस एक्वायर करते हैं, राइट? यस नो। यही कॉन्सेप्ट है, मींस यही कॉन्सेप्ट हम एक्सपेरिमेंट में भी देखते हैं, राइट? यस नो। तो अगर प्रैक्टिकली हम इस दोनों को रब करें तो वन विल बी पॉजिटिवली चार्ज, अनदर विल बी negatively charged, right? Yes, no. So the unlike charge nullify each other, means unlike charges अगर है, they will nullify each other effect when they comes in contact. Okay, and the electron of outermost orbit, अब ये chemistry का part जो है, right? Yes, no. So electrons revolving around the nucleus and they are in outermost अगर orbit है, right? Yes, no. So like KLMN cell, so in the outermost cell अगर है, तो the electron of the outermost orbit of an atoms are far from the nucleus. तो अगर न्यूक्लियस से दूरी, अगर माँ बाप से बच्चे दूर रहेंगे तो उनसे उनका प्यार क्या होगा, दूर रहेगा, राइट? यस नो। तो वो न्यूक्लियस मीन्स यहाँ पे अगर माँ बाप को कंसिडर करते हैं तो माँ बाप से अगर बच्चों को दूर, मगर बोल सकते हैं कि मैं मुंबई में हूँ और मेरे बच्चे अगर बेंगलोर में हैं तो मुझसे वो दूर है, तो मेरा प्यार उनसे दूरी पर है, राइट? यस नो। तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, राइट? यस नो। सो विद द न्यूक्लियस एंड कैन बी सेपरेटेड इजिली फ्रॉम द ऑर्बिट। तो वो न्यूक्लियस अगर उन बच्चों को अगर डाइवर्ट करना हो, माँ बाप के खिलाफ करना हो, तो इजिली किया जा सकता है, राइट? यस नो। तो क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में है, जो बच्चे माँ बाप के पास रहेंगे तो वो न्यूक्लियस के पास रहेंगे, न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्टेड रहेंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन रहेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन रहेगा, तो उनको डाइवर्ट करना इजी नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा ऑफ एन एटम फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। तो ये लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ एंड कैन बी सेपरेटेड इजिली फ्रॉम द ऑर्बिट बाय गिविंग सम एनर्जी। सो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर देन कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। So charge on an any material or body can be measured by इलेक्ट्रोस्कोप। तो चार्ज को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। सो एन इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? यस नो, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे स्टडी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ई एंड कांस्टेंट वेलोसिटी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक field, okay, and magnetic field both. An accelerated charge creates electric field, magnetic field and electromagnetic radiation. So now accelerated charge creates electric field, magnetic field and electromagnetic radiation. अब coulomb, 1 coulomb जो कि यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज 1 एम्पियर, तो जब 1 एम्पियर करंट की फ्लोइंग होगी, राइट? यस नो, किसी कंडक्टर में, और सेम टाइम मींस वो टाइम क्या लेगा, 1 second, right? Yes, no. So amount of charge flowing through any section of the conductor in 1 second when electric current in conductor is 1 ampere. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हियर इट इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर इट इज 9.1 into 10 to the power -31 kilogram.
Mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. So charge are named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. Okay, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने इस चार्ज को नाम दिया, राइट? यस नो? तो चार्जेस positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. Okay, so when a glass rod rubbed, right? Yes, no? Okay, so when a glass rod is rubbed with silk cloth, okay, some electrons are transferred from a glass rod to the silk cloth. अब यहाँ पे देखो, ग्लास रॉड को हम लोग जब रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, so some electrons are transferred from the glass rod to the silk cloth. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? तो glass rod rubbed with silk cloth, so some electrons are transferred from glass rod to silk cloth. तो glass rod जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है silk cloth को, right? Yes, no? Thus the glass rod becomes what? Positively charged, means donating electrons feeling positive, right? And gaining electron feeling negative. तो यहाँ पे सिल्क जो है वो कर्जदार समझ लो उन्हें कि वो नेगेटिव हो गया, राइट? इसमें उसे कर्जदार समझ लो तो वो नेगेटिव फीलिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे डोनेशन जो कर रहा है, जो दान कर रहा है, जो दे रहा है, वो पॉजिटिव फीलिंग करता है. तो इस तरह से याद रखा जा सकता है कि while donating electron they becomes positive, while gaining electrons they become negative. So when a plastic rod is rubbed with fur material, same electrons are transferred from a fur rod to fur to rod. Thus the plastic rod becomes negatively charged. Okay, यहाँ पे plastic rod क्या कर रहा है? Gain कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, and fur material becomes positively charged. तो fur material यहाँ पे क्या कर रहा है? Lose electrons, lose कर रहा है या donate कर रहा है, right? Yes, no? So they becomes positive here. अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम में सक्सेस स्पेक्ट्रम एकेडमी है, चैनल है, राइट? इसने उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे. और अगर ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए. ओके, कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन आपकी कमी हो रही है, उस चैप्टर को मैं जरूर यहाँ पे वीडियो बनाने में, मतलब वीडियो बनाकर उसको जरूर डालने की कोशिश करूंगा, राइट? यस, नो? तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्क थ्रेड है, राइट? यस, नो? ये सिल्क थ्रेड अटैच है ग्लास रॉड से. तो यहाँ पे ये ग्लास रॉड जो है इसको सिल्क थ्रेड से रब किया जा रहा है. तो ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिव, राइट? यस, नो? सो योर ग्लास रॉड विल बिकम positively charged and silk rod becomes negative, silk cloth becomes or silk thread becomes negatively charged. So your glass rod rubbed with silk, so glass rod become positive, and plastic rod rubbed with fur, so plastic rod is negative. So both will attract each other. So here you can say this glass rod rubbed with silk, both are positive here, and plastic rod rubbed with silk, so here it is negative, and plastic rod rubbed with silk, so here also it is negative. अब इन तीनों केसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट? यस, नो? तो इसको डिटेल में अगर देखें तो इन डायग्राम्स को समझने के लिए, अगर rub a grass rod with silk and suspend it from a rigid support by means of silk thread. Okay, being another similarly charged rod near, or bring another similarly charged rod near it. Okay, so the two charge repel each other. So here positive and positive, they will repel each other. तो इन तीनों केसेस को एक वन बाय वन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ सस्पेंड कर रहे हैं, राइट? इसमें उसको हैंग कर रहे हैं, ओके, सिल्क थ्रेड के साथ. तो ग्लास रॉड क्या था? पॉजिटिवली चार्ज है, और सेम चार्ज उसके सामने अगर हम लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? दे विल रिपेल ईच अदर, राइट? यस, नो? एंड हियर आई कैन से दिस, ब्रिंग अ प्लास्टिक रॉड, okay, rubbed with wool, okay, or fur, we can say, near a charged glass rod. Okay, सेम इन ए, जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में किया, राइट? यस, नो? सो विल डू इन द सेकेंड वन ऑल्सो. सो द टू रॉड अट्रैक्ट ईच अदर. तो अब एक यहाँ पे प्लास्टिक रॉड जो है वो क्या है? फर के साथ रब किया हुआ, वो नेगेटिवली चार्ज है. एंड पहला अगर रॉड देखें तो वो सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड है, तो वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. तो दोनों यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं, सो अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो नाउ रब अ प्लास्टिक रॉड विथ वुल. ओके, अगेन इफ विल सी हियर, ओके, फर के साथ इसको रब करो, वुल के साथ रब करो, ओके, एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. ब्रिंग अनदर सिमिलरली चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर इट. ओके, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन the two rods, so both are negatively charged here. So it was observed that if two glass rod rubbed with silk cloth are brought close to each other, they repel each other. Okay, means they both are positively charged. Okay, so now
same observation of two plastic rod rubbed with fur materials. Okay, so they are rubbed with fur materials, so they both are, means we can say, negatively charged, so they will also repel each other, but when they are positive and negative, they will attract each other. नाउ वी कैन सी द एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ओके, तो यहाँ पे देखो कि क्या है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, राइट? यस नो. सो इफ अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल, राइट? यस नो. तो यहाँ पे पॉलिस्टीरीन बॉल बोल सकते हैं. सो विच आर सस्पेंड बाय अ सिल्क थ्रेड, then two balls repel each other. So both are what? Both are positively charged. We can see here, right? Both are positively charged. Similarly, two pith ball is touched with a plastic rod. अब प्लास्टिक रॉड क्या था? नेगेटिवली चार्ज था, राइट? इसमें उसको अगर हम पिच बॉल के नजदीक लाते हैं तो ये पिच बॉल भी क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. सो स्पेयर टच्ड बाय द प्लास्टिक रॉड, सो बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, सो बोथ विल repel each other. Here both will repel each other, but one touched with glass rod, another will be touched with plastic rod, so they will attract each other. So one is positive charge, another will be negative charge. So here you can found, okay, similarly, two pith ball touched with plastic rod and plastic rod rubbed with fur are found to repel each other. So it is found that the pith ball touched with glass rod attract another pith ball touched with plastic rod, right? Yes, no. So we can conclude that. So what will be the conclusion here? तो यहाँ पे दो conclusion हो सकते हैं, right? Yes, no. एक क्या कि there are only two kinds of electric charges. One is positive charge, another one is negative charge. And like charge repel and unlike charge attract each other, right? तो like charge क्या करेंगे? Repel, okay, while unlike charge attract each other. So positive charge and negative charge, right? Yes or no? So we have two types of charges, positive and negative charge, right? So properties of charges अगर देखें तो properties हम देखेंगे आगे, right? Yes, no? Classification of material now. Okay, see it. So here you can see the next classification of material. So conductor, insulator, and semiconductor, right? Yes, no. So conductor, insulator, and semiconductor. So the material, okay, through which electric charge and current can flow easily are called conductor. Or conductor are those means we can say material which conduct electricity, okay, or which conduct heat, we can say. So they contain what? A large number of free electrons, which makes them good conductor of electricity, right? Yes, no. तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैरियर चाहिए. तो चार्ज यहाँ पे क्या है? जो चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होने के कारण, ओके, देम they are making them good conductor of electricity, right? Yes, no. Examples like metal, human body, graphite, acids, etc. Insulator, the material which resists the flow of electric charge and current are called insulator. Insulator means यहाँ पे जो चार्ज को फ्लो ही ना होने दे, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही ना होने दे, right? So electrons of outermost cells are tightly bound to the nucleus due to absence of free charge carriers, right? इसमें तो यहाँ पे कोई free charge carriers है ही नहीं, electrons है ही नहीं जो charge को carry करे, okay? So these substances offer high resistance to flow of electricity through them. एग्जाम्पल ग्लास, डायमंड, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड, etc. तो जितने भी यहाँ पे हैं ये सारे क्या है? इंसुलेटर्स हैं. सेमीकंडक्टर, द मटेरियल विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट बट value of their resistance is in between conductor and insulator are called semiconductor. Okay, so with increase in temperature their resistance is decreased and they will start behave as a conductor. तो ये कंडक्टर में भी बदल सकता है और इंसुलेटर में भी बदल सकता है. तो जैसे हम टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, तो ये कंडक्टर बन जाएगा, राइट? इट्स नो. सो रेसिस्टेंस बिटवीन देम, so conductor and insulators are called semiconductor. So with increase in temperature their resistance is decreased and they will behave like a conductor. And if you'll see at normal temperature they will behave as an insulator. Example क्या है? Silicon, germanium, etc, right? Yes, no. So nowadays semiconductor is most useful things, right? Yes, no. We are making mobiles, chips and all, right? Yes, no. Sim cards and devices, other electronics gadgets also. So method of charging, so process of producing charge on any neutral object is called charging, right? Yes, no. So there are three methods of charging: charging by rubbing, charging by induction, and charging by contact or conduction.
Okay, so if you'll see here, charging by rubbing, right? Is no. So when two bodies rub together, right? Is no, due to friction. Okay, some electrons from one body pass on to other body. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, right? Yes, no. So the body becomes positively charged. Okay, so the body that donate electrons are becomes positively charged, and the body which gains electrons become negatively charged. Okay, so silk thread, glass rod, right? Yes, no. So here I can see this both are in contact. They are positively charged. They will repel each other. Plastic rod and plastic rod, they both are negatively charged, right? Yes, no. They will repel each other. Here also glass rod and plastic rod, right? One is positive, another one is negative. So they will attract each other. Now here I can see this next is charging by induction. The process of giving one object a net electric charge without touching the object to a second charge object is called charging by induction. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A and B both are touching each other, right? Yes, no. अब A के नजदीक में हम लोगों ने कि प्लास्टिक रॉड या सॉरी ग्लास रॉड लाए, राइट? इसमें तो ग्लास रॉड क्या था? पॉजिटिवली चार्ज था। अब इस पॉजिटिवली चार्ज के कारण इंडक्शन होता है, राइट? इसनो ए में, और ए बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब ए की वजह से बी में चार्ज डेवलप होगा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ग्लास रॉड को कांटेक्ट में रख के हम ए और बी को सेपरेट करेंगे, राइट? इसनो सो ए बिकम्स फुल्ली नेगेटिवली चार्ज एंड बी बिकम्स फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज। देन charging by conduction, if we'll see here, so when a charged body is made to touch, okay, an uncharged body, some of the charges from the charged body is transferred to other body. This is called charging by contact or conduction. So here you can see this ebonite rod we have negatively charged, and here it is metal sphere. Okay, और ये एक insulated stand है, right? Yes, no. तो ebonite rod को जैसे ही हम metal sphere के नजदीक लाते हैं, the metal sphere becomes negatively charged, so here they will acquire that charge, right? Yes, no. So we can say this is charging by conduction. So now we have properties of charges. So properties of charges, first one is conservation of charge. So the charge of an isolated system remains constant. So here if we'll see, right? Yes, no, positive charge, sorry, conservation of charge. So the charge of an isolated system remains constant. This means that the charge can neither be created nor be destroyed, but it may be simply okay transfer from one body to another body. तो चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ऐसे नो, ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लाइक भगवत गीता सेड, राइट? ऐसे नो, आत्मा अमर है, ओके? तो आत्मा नहीं मर सकती है, नहीं वो जन्म ले सकती है, राइट? ऐसे नो, सो हियर द but atma can transfer from one body, right? Yes, no, so it will leave one body and again will transfer to another body, तो एक दूसरे body में जाता है। Relativity property है, so total charge of isolated system is equal to addition sum of charges on individual bodies of the system. This is called relativity property of charges. That is, if a system contains three charges q1 q2 minus q3, the total charge of the system will be equal to q1 plus q2 minus q3. अब quantization of charge क्या है? q equal to plus minus ne. So the total charge on a body is the internal multiple of fundamental charges E. So q equal to plus minus ne, where n is an integer, that is n equal to 1, 2, 3 we can say. So charge is means charge is unaffected by motion. Okay, this is fourth property we can say. So the charge on a body remains unaffected, right? Yes, no, of its velocity. So charge at rest equal to charge in motion. So like charge repel while unlike charge attract each other. This is another property we have. Okay, so now we'll move for the Coulomb's law. Okay, तो Coulomb's law यहाँ पे क्या है, right? Yes, no, we'll see it. See, Coulomb's law here, right? So the law describe how charges interact with one another was discovered by okay Charles Augustin D. Coulomb in 1785, right? Yes, no, तो explanation of Coulomb's law अगर देखें तो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम चलते तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट? yes, no, एक वेक्टर फॉर्म होता है, and importance for distance and medium. Comparison with gravitational force, we'll see it in details, right? So with a sensitive torsion balance, right, as no Coulombs measured, okay, the electric force between the charge pairs. So in Coulomb's experiment, the charge pair were much smaller than the distance between them, so that okay
the charge could be treated as point charges. तो उन्होंने जो चार्ज लिया था Q1 Q2 दो चार्जेस था और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण the charges are treated as point charges. The result of experiments of Coulomb and other are summarized in Coulomb's law. Okay, so it states that what the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charge inversely proportional to the source of the distance, right? Is no between them, right? So we can, sorry, square of the distance between them. तो यहाँ पे square of the distance means r square बोल सकते हो. So f equal to k q1 q2 और f is directly proportional to q1 into q2 and f is inversely proportional to r square. So we can write the formula here, f equal to k q1 q2 upon r square. K की value, that is 1 upon 4 pi epsilon naught, right? It's no 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. This is known as Coulomb's constant, where K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is what? Permittivity of free space. And if charge are placed in any, means we can say insulating medium, okay, other than vacuum, so there will be, means that is epsilon naught become epsilon naught into epsilon r. That also we'll see. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रख लें, कुलम्ब्स फोर्स एयर में ज्यादा स्ट्रांग होती है लेकिन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे वाटर में वीक होती है, राइट? ऐसे नो, तो ये कुलम्ब्स लॉ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखना चाहिए. So if you are liking this video till now, right, yes, no, please do subscribe the channel and don't forget to like this video also, right, yes, no, this will help me, okay, to create more content like this. Okay, and this will help the students as well, those they are preparing for JEE NEET and the class 12th as well. Okay, so here we are discussing the Coulomb's law. So here you can see the status, no, so if it is in the placed in the insulating medium other than, okay, vacuum, so Fm equal to what? Here it is 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square. तो अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं, रेशियो लेते हैं, राइट, इसमें f अपॉन एफ एम देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. So 1 upon 4 pi epsilon naught, and here you can say this 1 upon 4 pi epsilon. Okay, so q1 q2 r square get cancelled, right? So we'll get epsilon naught upon epsilon, that is epsilon r, relative permittivity of the medium, or known as K here, that is dielectric constant. So if we'll see here dielectric constant or relative permittivity K, so the dielectric constant of a medium is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, that is K equal to epsilon upon epsilon naught. Definition of Coulomb that we already defined, but here 1 Coulomb is the charge, right? Yes, no, so here I can say this is the charge which when placed at a distance of 1 meter, okay, from an equal and similar charge in vacuum or air will be with the force that is 9 to 10 to the power 9 Newton. Okay, so here we can see the next, that is Coulomb's law in vector form. So consider two like charges q1 and q2, right? Yes, no, they are located at point A and B in vacuum. So now here the separation between the charges is r. Okay, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, राइट, ऐसे ना इसको देख सकते हैं कि q1 and q2, okay, they are at point A and B, right, ऐसे ना. So here we have they are at point A and B and they are separated by a distance r. So as charge are like, okay, they repel each other. Okay, let F21 be the force exerted on charge q2 by charge q1. So F21, so here I can say this charge force exerted on charge q2 by q1, and F12 here you can see this. Next we have, okay, the charge exerted on charge q1 by charge q2. So r21, vector r21 is the position vector of q2 relative to q1, and r21 is unit vector, so along to b, therefore F21 is along to b and F21 equal to 1 by epsilon naught q1 r, और यहाँ पे unit vector किस डायरेक्शन में है, r21, right? Yes, no, r21, तो यहाँ पे क्या होगा r2, okay, r2 equal to r21 into r no, so F1 equal to 1 on 4 epsilon naught q1 r square r21 r, तो ये r क्या होगा r2, यहाँ पे r21 रहेगा. Similarly, if r12 is this vector of q, यहाँ पे F12 लिखेंगे, यहाँ r12 लिखेंगे, so similar only 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 on r cube का r12 vector.
अब ये था, ये one है, equation 2 है. So R1 and R1 both are opposite of each other, right? Yes, no. Therefore equation 2 becomes F1 equal minus 1 4 5 epsilon naught Q1 Q2 R2 R2. Yes, no. तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव जो हो जाएगा, राइट? yes, no. both are means F12 is minus F21. So if we'll compare both the equations, so F21 equal to minus F12. This means that the Coulomb force exerted on Q2 by Q1 is equal and opposite to the Coulomb's force exerted on Q1 by Q2. Accordance with Newton's third law. Thus, Newton's third law also hold good for electrical force. Okay, so here Newton's third law is satisfied, right? Yes, no. By the help of Coulomb's law, we can say. So F21 is minus F12, equal and opposite forces. So here you can see this force between multiple charges, और यहाँ पे किसको क्या बोल सकते हैं, superposition principle, right? So Coulomb's law gives the force between 2 point charges, but if there are a number of, we can say, interacting charges q1 q2 q3 q4 q5 like that, qn values are given, okay, तो वहां पे हम क्या करेंगे, then the force on a particular charge may be found by the principle of superposition. So it states that if the system contains a number of interacting charges, then the force on a given charge is equal to the vector sum of the forces, okay, exerted on it by all remaining charges. तो यहाँ पे जैसे हमने Q1 और Q2 दो चार्ज के लिए निकाला था, सिमिलरली Q1 मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लें Q, राइट? नो Q फॉर Q1, Q हियर Q2, Q6, Q3, Q से Q4, Q से Q5 like that. So force between any charges is not affected by the other charges. So that system of charges contain here n charges Q, Q, and so vector R1 R2 R3 related to origin O secondary, right? यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, राइट? नो R1 R2 R3 ये सारे क्या है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू origin. So the total force on Q due to all n charges is to be found. Okay. So here if F1, F2, F3, Fn, okay, are the forces acting on Q due to the charges Q1, Q2, Q3, Qn respectively, then the principle of superposition, the net force on Q is F equal to F1 plus F2 plus F3 plus dot 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 Fn here. So if the force exerted by charge is Qi, right? Yes, no, or Q is on Q is Fi. Then from Coulomb's law in vector form here, we can write it, right? Yes, no, in general form. Fi equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Qi into Q upon R vector minus Ri raised to 3 into R minus Ri here, right? Yes, no, vector R minus vector Ri. So the total force on Q due to all n charges may be expressed as, so F equal to I equal to what? 1 to n here we can write. So here you can see this, the total charge, right? Sorry, total force on Q due to all n charges may be expressed as I equal to 1 to n Fi. So here I equal to 1 to n, 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Qi upon R minus Ri cube or vector R minus Ri here. Okay, or 1 upon 4 pi epsilon naught and Q are constant, so we'll take it out here. So summation I equal to 1 to n Qi upon R minus Ri cube into R minus Ri. So this is the sum here, right? Is no, here summation represent the vector sum, right? Is no, so this is the principle of superposition. So here next is electric field, okay? So this electric field part, no, I'll make another video here that will be part 2 of this video, continuation of this video here, right? Yes, no, okay? So in that means I'll explain this part, okay? So means I don't want to make this video means long here, okay?
तो इसके लिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ, राइट, यस नो। तो यहाँ से आगे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट 2 में कंप्लीट होगा, राइट, यस नो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो इफ यू डू लाइक दिस, ओके, सो हियर, तो स्टूडेंट आज हमने कवर किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, यस नो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। कूलम्ब्स लॉ हो गया, राइट, यस नो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल गॉस लॉ ये चैप्टर मीन्स हम लोग आगे के वीडियो में, जो सेकंड पार्ट आएगा, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, राइट, यस नो, विद इन 1 days और 2 days, ओके, आई विल अपलोड दैट आल्सो, ओके। सो तो रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, राइट, यस नो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।